Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is friction and static friction. This is for class 11. First of all, we will try to define a friction and static friction. We know that when the two objects are in contact, suppose I take an object here, this is a table. I put on the table here a block of wood or anything. That means the two objects are in contact. One is having intention of motion. अगर जो ऊपर सपोज मैंने इस टेबल के ऊपर की किताब रखी है, दिस बुक इज हैविंग इंटेंशन ऑफ मोशन, balancing that when how it is having intention of motion. When I apply a force here, when I apply force on the book is having intention of motion on the table. Balancing forcing balance force is developed, balancing forcing is developed at the point of contact. This is the point of contact, this is the point of contact. That means balancing force is developed at the point of contact in opposite direction. That means when I apply force here in this direction, that means at the point of contact, this balancing force is developed at the point of contact in opposite direction. That means when the two objects are in contact, one is having intention of motion. How it is having intention of motion? When I apply a force, suppose I am applying a force 1 Newton on it, 1 Newton force is applied in this direction, then this that means this book or anything which is put on the table is having intention of motion. That means balancing forcing is developed in the this balanced force is developed in the opposite direction. Contact in opposite direction. That means दूसरा फोर्स इसमें डेवलप होता है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स मीन्स वो सपोज इफ 1 Newton force is applied 1 Newton. That means when balancing force, body does not move. Why body does not move? Because this force, body does not move, body is not moving. Why body is not moving? Because there develops another force in the opposite direction. That this force must be also, this is called, जब इसका हम नेम लेंगे स्टैटिक फोर्स, या इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस मस्ट बी आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन. जब अप्लाइड फोर्स भी 1 न्यूटन होगा, ये भी 1 न्यूटन होना चाहिए, ताकि ये बॉडी स्लाइड नहीं हो जाएगी टेबल पे ऊपर. सपोज इफ आई इंक्रीज दिस quantity of force, suppose I am applying 2 Newton of force. I am applying now 2 Newton of force on this book which are lying on the table. But here again we see body does not move, body is not moving. That means when body does not move, that means the static force which is developed in the opposite direction, it must be also equal to 2 Newton. फिर मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर रहा हूँ. अगर इफ अगेन आई एम इंक्रीजिंग द फोर्स 3 Newton, body is not again moving, body does not move again. Why does not move again? Because the opposite force which are developed in the opposite direction, that is static friction, it must be also equal to 3 Newton. That means अगर हम 4 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन होगी, ताकि ये बॉडी मूव नहीं होगी. दैट मीन्स here we are having the same body and same mass, same body, book is lying, same mass, same in contact, and I am applying the force, but I am applying different amount of force. The body does not move in this. What is happening here? If 1 Newton force is applying, it develops another force in opposite direction, that is also equal to 1 Newton. That means these two forces are balanced but are equal in magnitude but act in opposite direction, so that body does not move. Now I am applying 2 Newton of force. It does not again move because this also, why लॉजिक क्या होना चाहिए, ये क्यों नहीं आगे जा सकते? बिकॉज the opposite force must be equal to also 2 Newton. If I am applying 3 Newton of force, the it again does not move. लॉजिक ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी इस पर 3 न्यूटन होना चाहिए. दैट मीन्स इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन में है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है. व्हाट इज प्रॉपर्टी? इट इज ऑटो एडजस्टिंग इटसेल्फ. इट इज, प्लीज रिमेंबर, स्टैटिक friction is auto adjusting itself.
सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा व्हाट इज़ कॉल्ड ऑटो एडजस्टिंग। सपोज ये मेरा हाथ है, सपोज ठीक है, अगर कोई चीज़ मेरे हाथ पे गिरेगा, सपोज अगर कोई चीज़ 1 kg ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मैं इसको अपने हाथ में रखूँगा, या ½ kg, या सपोज 200 ग्राम्स कोई चीज़ ऊपर से आएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मैं इसको इस नीचे हाथ से अप्लाई फोर्स करूँ ताकि ये नीचे की तरफ नहीं आ जाएगी। सपोज फिर मैं दूसरा कोई चीज़ जिसमें 250 ग्राम है, 250 ग्राम्स, आई एम अगेन स्टॉपिंग दिस, तो ताकि ज़मीन पे नहीं गिरेगा। अगर तो तीसरा फोर्स, सपोज मैं कोई 500 ग्राम्स का है, आई एम इट अगेन ऑटो एडजस्टिंग, ताकि नीचे की तरफ नहीं है, दिस कॉल्ड ऑटो एडजस्टिंग। सिमिलर वे दिस when we apply force on this book that it develops this static friction in opposite direction, it is having a property, it is called auto adjusting। जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है तो इसको ये भी 1 न्यूटन डेवलप होता है। अगर हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है इसको भी 2 न्यूटन, क्योंकि अगर ये ज़्यादा और ये अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये मूव हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऑटो एडजस्टिंग कहते हैं। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो एडजस्टिंग। अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन अब डिफाइन करनी, फ्रिक्शन यही होता है, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और स्लाइड्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब व्हेन द टू बॉडीज आर इन कंटैक्ट, एक बॉडी दूसरी की बॉडी ऊपर चलना चाहती है, या it intends to try to move in the another body, opposite force comes into play on over their surface in opposite direction, this force is called friction। static friction में क्या होता है? static friction में जब बॉडी एक ही जगह, जब that means when we are applying force the body does not move, that means the opposing force that comes into play when a body tends to move over the surface of another body and actually motion has not yet started, that means इसको हम static friction कहते हैं। that means टू बॉडीज जब कंटैक्ट में होंगे, वन इज हैविंग इंटेंशन ऑफ मोशन बट बैलेंस फोर्स इज डेवलप्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स द बॉडी रिमेन्स एट इट इज स्टेशनरी पोजिशन, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इट इज़ कॉल्ड ऑटो एडजस्टिंग, इट्स कॉल्ड ऑटो एडजस्टिंग। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, यही मैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। सपोज सम बॉडी इज फॉलिंग, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ गिरती है, सपोज 200 ग्राम्स, आई पुट माई हैंड ऑन दिस एंड with the help of my hand I am stopping this, that means I am applying here the force so that this 200 grams does not fall on the ground. Similarly when it is 200 grams, I am able to stop this again. If it is 500 grams I am able to, suppose if it is limit exceeds is the, suppose अगर इसका वेट सपोज 10 kg हो जाएगा, ऊपर की तरफ 10 kg आ जाएगा, जब मैं इसको हाथ नीचे रखूँगा तो आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दिस, क्योंकि इसमें जो इसका जो लिमिट है वो एक्सीड होता है, वो जो मैं जिसका मैं जो मेरा ऑटो एडजस्टिंग फोर्स का जो लिमिट है वो इससे एक्सीड होता है, तो ताकि ये चीज़ नीचे की तरफ गिरता है। इसी तरह ये भी है, जब हम अप्लाई फोर्स करते हैं हियर, सपोज अप टू दिस, सपोज आई एम अप्लाइंग हियर अगेन 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स, if static friction of force is also 5 newton, that is called balance force। suppose if I applying here 5.1 newton force, but if the maximum value of static friction, जब इसका maximum value, that means when it जो auto adjusting जो कर रहा है ये force, when it has a property of auto adjusting, जब इसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, सब इसका लिमिट 5 न्यूटन ही है, जब इसका लिमिट 5 न्यूटन ही है तो जब हम इसको subtract करेंगे, its answer is 1 newton, 0.1 newton, that means when it's 0.1 newton it is not balanced, it starts moving, that means this is called 5.5 up to 5 newton, static friction भी 5 newton होगा, this is called static friction। and after that when it increases the value, when the applied force increases, this is called, that means friction does not increase, जो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये इससे बैलेंस नहीं कर पाता है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वायर द वन इसको क्या हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन force of friction which comes into play when a body is just going to start sliding over the surface of another body is called a limiting force or limiting friction। when we try to
टू द ग्राफ बिटवीन दिस अप्लाइड फोर्स। जब मैं ग्राफ में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज applied force, this is the static friction applied force applied here. This is the static. Suppose if force applied is zero, limiting static friction is zero, if force applied is 1 न्यूटन, इसका वैल्यू भी 1 न्यूटन, ताकि बैलेंस हो जाएगा, ये स्लाइड नहीं हो जाए। अगर इसका वैल्यू 2 न्यूटन, इसका भी वैल्यू 3 न्यूटन, 5 न्यूटन पे एक ही है। तो व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज, it gives a straight line at an angle of 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ है, दैट मीन्स इफ दैट फोर्स अप्लाइड अगर 2 न्यूटन है, इसका भी वैल्यू 2 न्यूटन है, ताकि तभी बॉडी स्लाइड मूव नहीं हो जाएगी ओवर द अनदर सरफेस। जब इसका वैल्यू 3 न्यूटन हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 3, जब इसका वैल्यू 4 न्यूटन हो जाएगी, इसका भी वैल्यू 4, जब इसका वैल्यू 5 न्यूटन हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 5। लेकिन जब इसका वैल्यू 5.1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तब भी, दैट मीन्स इट डज नॉट इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज, दैट मीन्स इट्स नॉट बैलेंस्ड विद द अप्लाइड फोर्स। व्हेन इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय फोर्स, ये ऐसे हो जाएगा, that means here it starts down here, that means value of this applied force increases, the value of static friction remains same, या यहाँ सेम हो जाएगा। फिर जब जब that means this portion is called limiting friction, ये limiting friction है। फिर ये स्मूथली मूव हो जाएगा, this is called when it moves over smoothly, it is called kinetic friction, वो हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। here this portion is called static friction, ये static friction हो गया, static friction this force यहाँ से जो ऊपर, it is auto adjustable, जो ये पोर्शन है, इट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस मैक्सिमम वैल्यू, इट इज कॉल्ड limiting friction. That what is limiting friction? Limiting friction is the maximum value of static friction. If applied force is crossing this value, body starts moving, that means it is the maximum, it is the, अगर हम limiting friction क्या define करेंगे, limiting friction, it is the maximum value of static friction if applied force is greater than or crosses this value, the body starts moving. This value is called static friction. I hope you have got from the graph. अगर हम ये करेंगे, दैट मीन्स यहाँ तक जो वैल्यू है, इसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एक जैसा होता है, ताकि ये बैलेंस रहती है। जब वी आर अप्लाइंग फर्दर द अप्लाइड फोर्स, the static friction, the value of static friction remains the same, and it remains the same, that means this applied force increases, this maximum value यहाँ से ये क्रॉस होता है, this crosses the value of this static friction, ये this value is called limiting friction. It is the maximum value of the static friction where the body is just going to slide over the surface of another body. This is called limiting value of friction. जहाँ पर body चलता है, this is called kinetic friction. This is called kinetic friction. I hope you have got it. Inshallah, we will meet in the next class. Thank you very much.